Hello guys, welcome to my channel, The Tarot Universe. If this reading doesn't resonate, please you can leave it and see other readings. Today we are going to do the late night thoughts of your person. So please think about your person and say his name 3 times so we can get direct messages from the universe. Personality. Aries and financial. Oh my god. Why do I think about my ex in this reading? So his sign may be Aries. I can see he is a bit emotional. He may be emotional. He may value his personality more. He may be a little insecure also about himself. He may be kind of insecure with himself, his personality, the way he looks. Okay. With Aries, he is confident in taking action. But with the number 2, it seems he will not take actions because of some financial things, some financial situations. He is, yes. So let's read the energy. Okay. I think I should put a little here. Okay. So that I can get more space. It's hot. Yeah. So let's read. He's not in his energy because of financial situations here. बहुत फाइनेंशियल सिचुएशन है. ऑल्दो ही सीज यू एज, होता है ना आप लोग के भले लाइक 36 से 36 गुण मिलते हो, मतलब उनके लाइक थिंकिंग में ही थिंक्स यू आर द परफेक्ट पर्सन. आपके भले 36 से 36 गुण मिलते हो, बट राइट नाउ ही विल नॉट, he wants to take actions for you, but he's not in the position to. Although in the long run he sees something good or something stable, a stable connection with you. He does see that in a long term. Yeah, but he has lots of doubts and he needs more time or more clarity to come forward. Yes, he does want to come forward. It's not that he doesn't. He has lots of passion and willpower to come forward, but there are some things that he still needs to be clear of, and especially his financial situation doesn't seem good. The financial situation doesn't seem that good. Maybe he's having some losses. He's having some losses. Let's see. Two of Wands. Two of Wands. Five of Wands. He
sees the value of this connection, but this value is on, he never maybe have told you also कि what I have plans for you. He has never said this to you. It is like it's in his mind, but he hasn't told you this. See, अभी ये उठा नहीं है, दोनों एरोज उठा नहीं है, अभी तक सोच ही रहे हैं. The Chariot, coming forward in this connection very fast, but although this connection is dead, the star on King of Swords उठ तो गया. He wants it, he hopes it, he manifests it because he sees the value of this connection. He or she sees the value of this connection. I don't want so many cards, just want one card, just want one card, universe. Yeah, but he, again पैर डगमगा रहा है. Okay, I just want to confirm the death card that had come here. Okay. Yeah. You are very pretty, like an empress energy. Oh my god. You are in this empress high priestess energy. Okay. Give me some time. So you are in this empress high priestess energy, death card. So as the light, it went off with the death card. I feel he doesn't have a lot of courage, even though he wants to come forward like this, but there is something that's stopping him. Maybe I can say mostly the status is not the status. तुम लोग दोनों का जो एक सोसाइटी में स्टेटस हो सकता है, वो स्टेटस इज नॉट equal. If not equal, it's like one is lower, one is higher. या तो आप हाई हो सकते हो, या तो वो हाई हो सकता है, या आप लो सकते हो, या वो. इट कैन बी समथिंग, क्योंकि इनको आपके लिए स्टैंड लेने में ना थोड़ा पैर डगमगा रहा है इनका. ठीक है. Now let's see what's actually the connection, okay, between you guys. What's actually the connection? It's not a good sign. He is narcissistic, love bombing, self-absorbed, one-side. Self-absorbed तो मैंने बोला ही था वो आपका सन देख के. Oh yeah, he does have unconditional love for you, but again he's scared. Grounding. तो रूट चक्र ब्लॉक हो सकता है. Butterfly. Evolving, growing, releasing the past, healing the inner child. Yeah, you be busy. He wants to take you out, he wants everything, but he does. No, this person is more of a childish than being mature. मतलब he wants you, he wants everything with you, he wants this life with you, but action नहीं लेना. अब action नहीं लेना, तो what's the use of having this connection, right? जब action ही नहीं लेना किसी को मेरे लिए, तो मैं आप entertain ही क्यों कर रहे हो? आप ये reading क्यों देख रहे हो? He will not. He. I'm telling you, he will. He will. He's not that into you. Also, he sees you as a stable partner. वो अलग है. But he's not that into you also कि फैमिली, पैसा, स्टेटस, सोसाइटी वो सब छोड़ के आपके पास आ जाए.
नहीं है भाई, मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है। रिलेशनशिप, पार्टनर, आई टोल्ड यू, सब कुछ मैटर करता है। आप प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि आप इनके लिए घर परिवार फैमिली भगवान सब चेंज करके इनके प्यार में वो रूखी सूखी रोटी नहीं होता है। रूखी सूखी रोटी आजकल के ज़माने में नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दीज पीपल विल ओनली टेक एडवांटेज। आई एम टेलिंग यू, ऐसे मत करो। हील योर सेल्फ, हील योर एनर्जी, ओके? ऐसे मत करो। हील योर एनर्जी, हील योर सेल्फ। ही मे लव यू, ही मे शो ही लव्स यू। उनके साथ आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि he loves me so much, मैं I am his love, he will tell you also you are my soulmate, you are have been waiting for you, आप सबसे बेस्ट कनेक्शन हो। पर क्या फ़ायदा इसका जब उतना उनको, अगर उनको इतना समझ में आता, उतना अगर उनके माइंड पे होता, तो वो आपके लिए स्टैंड ना लेते। अगर इतना ही कोई आप प्यार में है, आप तो उनके लिए रेडी होना स्टैंड लेने, घर परिवार से लड़ने के लिए, पर वो तो नहीं लड़ रहे हैं आपके लिए। चेंज योर माइंड, चेंज योर माइंड, चेंज योर माइंड। आप ऐसा मत होइए कि don't do this for with yourself. I hope you like my readings. Please subscribe to my channel and comment if you want to claim this reading. I know मैं थोड़ा थोड़ा करवा बोल जाती हूँ, पर मैं अपना रीडिंग को ढाक भी नहीं सकती। जो आया है मेरे टेबल पे, जो आता है मैं वही बोलती हूँ, जो नहीं है मैं नहीं बोलूँगी। आपको बुरा लगेगा आप कमेंट करो, आपको अच्छा लगेगा आप कमेंट करो, जो भी है आप बोलिएगा, क्योंकि मेरे को भी पता चलेगा कि what you guys want. But the thing is, I don't want to lie to you, I don't want to lie to anybody. जो आता है रीडिंग्स पे, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। He doesn't like you that much that he will take a stand for you, and that is for sure, क्योंकि उनके फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है। और इट्स नॉट दैट उनका फाइनेंशियल पे प्रॉब्लम है, मतलब वो नहीं कि पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। द थिंग इज, he will not leave his financial status or security to come and marry you, no matter how good you will be for this person. आप कुछ भी कर लो, he will not, okay? The moment he will find better, he will go, okay? So don't force onto this connection, think about yourself, okay? अपना ग्रो करो, अपना अच्छा करो। ऑल्सो अगर मैं थोड़ी लाइक रूड हूँ या कुछ भी आपको बुरा लगा, तो आई एम सॉरी, ठीक है? थैंक यू सो मच। Please subscribe to my channel and press the icon if you want more tarot readings. And also, if this did not resonate, this reading did not resonate, you can go and see other readings as well. मैं रोज एक नया रीडिंग पोस्ट करती हूँ, आज किसी और के लिए होगा, कल किसी और के लिए था। आई एम थिंकिंग आई विल डू पिक अ कार्ड्स, बस पिक अ कार्ड्स में टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। सो नाउ व्हेन आई एम मेकिंग मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग एंड लेट नाइट थॉट्स, सो 4 रीडिंग करने के बाद फिर पिक अ कार्ड्स करना मुश्किल हो जाता है। तो यू से आपको कैसा चाहिए? आपको पिक अ कार्ड्स चाहिए तो फिर एक दिन का रीडिंग, लाइक आई विल ओनली डू पिक अ कार्ड्स फॉर अ डे। सो लेट्स सी, okay? Please comment on what you want, okay? So however, this was a general reading, I hope you like it.